Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, water. Introduction. Nature has provided many things which are necessary for humans and other living things such as animals and plants. Water is the most important thing for our daily life. Indeed, it is a unique substance. Water covers about 3/4 of the earth's surface. That is why it is the most plentiful substance on the earth. It is found on the earth in the form of rivers, seas, streams, ponds and lakes. Water is present not only on the surface but also in vacant spaces between the rocks, as the snow and ice on the mountains, and frozen forms and glaciers and in the ice caps. In the sky, water is present in the form of vapor, on the earth in the form of rain or snow, and ultimately flows into the sea. Thus, we have water all around us. देखिए, water is provided by nature, which is very very important for all of us. हम daily activity जो है water से ही करते हैं, है ना? तो water आपका एक ऐसा substance है जो तीनों states में आपके पाया जाता है, solid, liquid and gas के. ठीक है, earth पे आपके water bodies हैं, right? जैसे कि rivers, seas, oceans. कई बार ये आपके जो वेकेंट स्पेस होती है रॉक्स के बीच में एज अ स्नो पाया जाता है, आपके आइस माउंटेन्स में पाई जाती हैं, ग्लेशियर्स में, फ्रोजन फॉर्म्स में. वाटर स्काई में वाटर जो है वेपर की फॉर्म में, और अर्थ में बारिश या रेन आपकी जब आती है तो अल्टीमेटली ये सी में आपका फ्लो होता है. वाटर इज वन ऑफ द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग थिंग्स. द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 70% water by weight. Water is also present in plants, vegetables and fruits. Water is essential for the growth and survival of plants and animals. Water is used for a variety of purposes such as drinking, bathing, washing, cleaning and cooking. Water is also used in cultivations, different industries, generating electricity and for putting out fires. With a regular and adequate supply of water, we hardly feel its importance. However, whenever there is a sudden scarcity of water, we realize how important it is in our day-to-day life. The climatic condition of a place largely affected by any sea or river in the vicinity. The moisture in the atmosphere is essential for the comfort and general health of our body. वाटर आपकी प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में भी पाया जाता है. वाटर प्लांट्स की ग्रोथ और उनके सर्वाइवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिमल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. हम डेली एक्टिविटीज़ जो हैं वाटर की हेल्प से करते हैं. ओके, अब देखिए जो आपका आपकी रेगुलर और एडिक्वेट सप्लाई जब वाटर की होती है तो हमें इसकी इंपॉर्टेंस का पता ही नहीं चल पाता कि इसका सिग्निफिकेंस एक्चुअल में क्या है. लेकिन एकदम से सडन कभी वाटर की स्कैरसिटी हो जाती है तो हम सडनली रियलाइज़ करते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए. इसीलिए वाटर को मतलब सेव करना कितना ज़रूरी है. सोर्सेज ऑफ वाटर: ओशंस, रिवर्स, वेल्स, रेन्स एट्सेट्रा आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर. Oceans are the bigger source of water and store millions liters of water. About 71% of the Earth's surface is covered with oceans and contain about 97% of the Earth's total water resources. Arctic and Antarctic oceans have a lot of water in the form of ice and account for most of the 3% of the world's fresh water resources. Like polar ice caps, surfaces of high mountains are covered with snow. Though snow and ice are good source of water, this source is rarely used except in areas of severe scarcity where it is melted and used. For this purpose, huge loads of icebergs from Arctic regions are sometimes towed and melted. ओशन में आपका बहुत सारा पानी पाया जाता है. आपको पता है कि अर्थ सरफेस का जो 71% है वो वाटर से कवर्ड है, एंड 90% जो वाटर है अर्थ सरफेस का वो आपका ओशंस में पाया जाता है. राइट आपका जो आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक ओशन है इसमें बहुत सारा पानी है बट वो आइस की फॉर्म में है, एंड जो वर्ल्ड का फ्रेश वाटर रिसोर्स है उसका ये लगभग आपका 3% है. इसी तरह से आपके जो हाई माउंटेन्स हैं वो भी कवर्ड रहते हैं स्नो से. हालांकि जो स्नो एंड आइस है ये गुड सोर्स ऑफ वाटर है बट इसको यूज़ नहीं किया जाता है कुछ कंडीशंस में जब बहुत ज़्यादा सीवियर स्कैरसिटी हो जाती है. Did you know, is distilled water suitable for cooking? Distilled water has very low mineral content. When cooking any vegetable rich in minerals is demineralized water, a negative osmotic pressure appears on the vegetable which makes it lose all its minerals in behalf of the water. That is, the vegetable would lose all its minerals which would pass onto the water which is then thrown away into the sink. As a result, we would be eating vegetable lacking an essential mineral. कि डिस्टिल वाटर कुकिंग के लिए सूटेबल होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें मिनरल कंटेंट काफ़ी कम होते हैं, इसीलिए ये कुकिंग के लिए सूटेबल नहीं होता है. Ocean contains 97.4% of total Earth's water, but sea water is not fit for use by many living organisms as it is salty. It contains about 3.6% of dissolved salt by mass. Sea water में आपका देखिए कितना परसेंट वाटर है, राइट, बट ये दिस इज़ नॉट फिट फॉर कंजप्शन क्योंकि ये सॉल्टी होता है. We need to remove the dissolved salt from sea water
If you want to use it, seawater also contains salts of chlorides, bromides, iodides, etc. Thus, even less than 1% of all the water on the earth is available for the survival of all land organisms and for use in irrigation and industry. This makes water all the more precious and we should not waste it. तो देखिए, सी वाटर अगर आपको यूज़ करा तो उसमें से जितने भी डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं उन्हें हटाना पड़ेगा. इसमें आपके सॉल्ट्स होते हैं क्लोराइड्स के, ब्रोमाइड्स के, आयोडाइड्स के. तो आप देखिए कि जो लेस देन 1% है वाटर का वही अवेलेबल है फॉर द सर्वाइवल, राइट. इसका मतलब आपका वाटर कितना प्रेशियस है. Rainwater, it is the purest form of water. It is also one of the major sources of water. Rainwater is obtained in nature by the process of evaporation and condensation of water vapor rising from the oceans, seas, rivers, lakes and land, etc. रेन वाटर आपका एक तो सबसे पहली बात मेन सोर्स ऑफ वाटर है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, और ये आपके पास कैसे मिलता है? बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. The evaporated water vapor condenses to form clouds which travel across the sky and dissolve oxygen, carbon dioxide and dust from the atmosphere. Thus, the first shower wash most of these impurities and the subsequent showers contain almost pure water. In places where the air is polluted, it may also contain harmful substances such as acids. तो देखिए, जो evaporated water vapor होता है कंडेंस होकर क्लाउड्स बनाते हैं जो कि स्काई में ट्रैवल करते हैं एंड उसके बाद आपके डिजोल्व ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट को डिजोल्व कर लेते हैं एटमॉस्फेयर पे. तो जो पहली शार आती है यानी जो पहली बारिश होती है तो उसमें सारी आपकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, लेकिन उसके बाद जो आपकी बारिश आती है वो ऑलमोस्ट आपका प्योर होता है. कई प्लेसेस में एयर पोल्यूटेड होती है तो ये बारिश के साथ आपका जब मिक्स हो जाता है तो एसिड रेन बनाता है. इन इंडिया वी गेट रेन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज ड्यूरिंग मानसून सीजन. But a very large area of agricultural land is largely dependent upon rainwater for irrigation. So rainwater is stored in artificial and natural lakes for use over a long period of time. अब बारिश जो इंडिया में शॉर्ट पीरियड के लिए आती है और हमारी जो एग्रीकल्चरल जो लैंड है वो डिपेंडेंट होती है लार्जली रेन वाटर पे, इसीलिए रेन वाटर को स्टोर किया जाता है आर्टिफिशियल और नेचुरल लेक्स में. मेनी इंडियन सिटीज आर डिपेंडेंट ऑन सच लेक्स फॉर देयर वाटर सप्लाई. रेन वाटर फाइंड्स इट्स वे बैक टू ओशंस थ्रू रिवर्स. Surface water. A part of rainwater that runs off on the surface of the earth is called surface water. This water goes into drains and then to ponds, streams, rivers, lakes, canals and springs. Water from the melting snow on the mountain also flows into the rivers. Rivers are an important water resource. Water from the melting snow on the mountains also flows into the rivers. Rivers are an important water source in our country, but unfortunately most rivers get flooded during monsoon and remain almost dry during the rest of the year. अच्छा, जो बारिश का जो पानी होता है उसका जो आपका जो सरफेस पे रन ऑफ होता है वो सरफेस वाटर है. ये पानी आपका जाता है ड्रेन्स में, पॉन्ड्स में, स्ट्रीम्स में, लेक्स में जाता है. तो रिवर्स आपकी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपकी एज वाटर सोर्स, बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर जो रिवर्स होती हैं ये मानसून के टाइम पे फ्लडेड हो जाती हैं और बाकी साल ये आपकी ड्राई रहती हैं. Rivers like Ganga and Brahmaputra originate from the Himalayas and flow throughout the year. To avoid flooding of rivers and to ensure proper use of the water, dams like Bhakra Dam, Nagarjuna Dam, etc. have been constructed at appropriate place on various rivers in our country. The water stored in dams is made available to the agricultural feeds through canals throughout the year, a major factor contributing to the green revolution. अब जैसे गंगा और जो ब्रह्मपुत्रा रिवर हैं ये आपकी हिमालय से ओरिजिनेट होती है और ये पूरा साल आपकी फ्लो करती हैं. तो फ्लड को अवॉइड करने के लिए बहुत सारे डैम्स बनाए गए हैं इन रिवर्स में. एंड आपको पता है कि जो पानी आपका स्टोर होता है डैम्स में फिर उससे एग्रीकल्चरल फीड को आपका इरिगेट किया जाता है. Surface water contains dissolved salts and many suspended impurities. It picks up rock particles, garbage dumped on the earth's surface, excessive fertilizers and pesticides from crop field, human and animal excreta, and even disease-causing germs. Thus, the surface water carries a waste dumped from homes, offices, and industries also. अब जो surface water होता है उसमें आपके salt होते हैं, dissolved, बहुत सारे suspended impurities होती है. ये डस्ट पार्टिकल को या रॉक पार्टिकल्स को पिक करते हैं. जो अर्थ के सरफेस पे जो भी गार्बेज होता है जिसमें आपका फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड्स है, ह्यूमन एनिमल एक्सक्रीटा, ये सब इसको अपने साथ पिक करके लेके आते हैं. तो जो सरफेस वाटर होता है आपका वो वेस्ट जो घरों से या आपके ऑफिस से या इंडस्ट्री से आता है उसको भी कैरी करता है. All this makes the surface water unfit for human consumption, so it is treated to remove various chemical and physical impurities and then supplied to towns and cities through pipeline for our use. This has also made possible to have a year-long water supply in spite of a short duration monsoon. While realizing the stored water into the canals, it is used to run generators for producing hydroelectricity. अब क्योंकि सरफेस जो वाटर आपका तो कंटामिनेट हो गया तो ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए तो अनफिट है ही नहीं.
फिट नहीं है, सॉरी. While releasing the stored water into the canals, it is used to run generators for producing hydroelectricity. अब देखिए सरफेस वाटर आपका कंटामिनेटेड है तो ये तो कंजप्शन के लिए फिट है ही नहीं, तो इसीलिए इसको ट्रीट किया जाता है कि इसमें से जितनी भी केमिकल या फिजिकल इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव हो सकें, और उसके बाद ये सप्लाई किया जाता है टाउन्स या सिटीज़ में पाइपलाइंस के थ्रू. ग्राउंड वाटर, अ पार्ट ऑफ रेन वाटर दैट seeps into the ground through soil and collects over non-porous rock is called the groundwater. This water forms a sort of large water body like a lake and becomes an important source of water. It can be taken out by digging bore wells, and then water is pumped out by using pump sets or motors. Tube wells and hand pumps are used by farmers to take out this water for irrigation. अब देखिए कुछ आपका जो रेन वाटर होता है वो आपका ग्राउंड में सीप हो जाता है, राइट, एंड फिर यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है नॉन पोरस रॉक के अबव, जिसे ग्राउंड वाटर कहा जाता है, और फिर हम जैसे ट्यूबवेल्स के थ्रू, हैंड पंप्स के थ्रू इस पानी को ड्रॉ करते हैं. ग्राउंड वाटर इज अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर फॉर सप्लाइंग टाउन सिटीज फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज. द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ एट एनी गिवन प्लेस इज नोन एज अ वाटर टेबल. It is going down at many places in our country because of its extensive use. अच्छा, अब देखिए ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, तो इसकी वजह से जो वाटर टेबल है, यानी जो लेवल है ग्राउंड वाटर का, वो काफ़ी अब डाउन होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है. This shows that more groundwater is being used up and then what is replenished by percolation of rainwater. यानी जितना replenish नहीं होता है उससे ज़्यादा वो use हो रहा है. We must take some important step to replenish the groundwater reserves by planting more trees, constructing earthen dams in rural areas and by rainwater harvesting in urban areas. तो ground water को हम replenish कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा plants को लगा के, अर्दन डैम्स को कंस्ट्रक्ट करके स्पेशली रूरल एरियाज में, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड को अडॉप्ट करके. द ग्राउंड वाटर ऑल्सो कंटेन्स मेनी डिसॉल्व इम्प्योरिटीज, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म, eggs of insects and their larvae etc. That is advisable to filter and boil the groundwater before drinking it. Sometimes the groundwater runs along the surface of the non-porous rock and comes out of the earth's surface at some places to form a natural spring. अच्छा, अब जो ग्राउंड वाटर है तो उसमें भी बहुत सारी डिसॉल्व इम्प्योरिटीज होती हैं, जॉम्स होते हैं, आपके एग्स होते हैं इंसेक्ट्स के, तो इसीलिए उस पानी को यूज़ करने से पहले इसको फिल्टर करना चाहिए या फिर बॉईल करना चाहिए. कई बार जो ग्राउंड वाटर होता है वो सरफेस पे आ जाता है नॉन पोरस रॉक के, एंड अर्थ कुछ प्लेसेस पे तो नेचुरल स्प्रिंग उसे कहते हैं. Water as a natural resource. Materials found on the earth that allow the existence of life and satisfy the needs of living organisms are called natural resources. Plants and animals are living natural resources, while air, water, soil and minerals are non-living natural resources. We get these natural resources from the earth's crust or lithosphere, atmosphere or oceans, rivers or lakes, and the atmosphere or the air around the earth. The extensive use of natural resources by man has greatly altered and affected our life. On the basis of their usage, natural resources are divided into two categories. अच्छा देखिए, नेचर ने हमें ना बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि आपका प्लांट्स है, एनिमल्स है, नेचुरल लिविंग नेचुरल रिसोर्स हैं, जबकि एयर, वाटर, सॉइल आपके नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्स हैं. बट अब क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज का इतना यूज़ किया जा चुका है कि ये हमारी लाइफ को इसने काफ़ी ऑल्टर कर दिया, काफ़ी अफेक्ट कर दिया. तो नेचुरल रिसोर्सेज को देखिए दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. द रिसोर्सेज लाइक सनलाइट दैट विल ईदर never run out, or like oxygen that will be replaced within a reasonable period of time through natural processes, are called renewable resources. But these are exhaustible if we use them faster than they are renewed, or if their natural process of renewal is disturbed. For example, we read that groundwater is a renewable resource, but we are using it at a much faster pace than it is renewed, leading to lowering of water table and scarcity of water in some areas. Massive deforestation and construction activities are also responsible for the decreased rate of renewal of groundwater. देखिए, आपका सन जो है इसकी एनर्जी कभी रन आउट नहीं होगी, लाइक आपका जो ऑक्सीजन है वो भी रिप्लेस हो जाएगा रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में, राइट, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू. तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, बट ये एग्जॉस्टेबल है, यानी कि अगर इनको जितने टाइम में रिन्यू हो रहे हैं उससे कम टाइम में हमने इन्हें यूज़ कर लिया तो ये क्या हो जाएगा कि जो रिन्यूअल जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. जैसे ग्राउंड वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है, वी नो दैट, बट आज हम जो ग्राउंड वाटर को ना बहुत ही फास्टर पेस पे उसको यूज़ कर रहे हैं, देन इट इज़ रिन्यूड, तो एक टाइम पे ऐसा होगा कि ये ख़त्म हो जाएगा. The resources like fossil fuels, petroleum, natural gas or coal take millions of years to form. Once used up, they cannot be replaced within a short period of time. These are called non-renewable resources. अब जैसे पेट्रोलियम है या आपका कोल है, नेचुरल गैस है, इनको बनने में लगते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स. तो एक बार अगर ये
ख़त्म हो गए, यूज़ हमने कर लिए, तो ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में या रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में इनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो ये सोर्सेज आपके होते हैं नॉन रिन्यूएबल। सिमिलरली, it takes hundred of years for a few centimeters of topsoil to form. If eroded, it cannot be replaced. However, some non-renewable resources like metals can be recycled and reused. इसी तरह से आपकी जो topsoil है, आपकी सॉइल है, उसके कुछ सेंटीमीटर बनने में 100 of years लगते हैं, तो अगर इरोड हो गई तो इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। हालांकि कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जैसे कि मेटल्स, उनको रिसाइकिल किया जा सकता है एंड देन रीयूज किया जा सकता है। Water is also an important natural resource and there is plenty of water on earth, but water distribution of the earth is non-uniform. We hear of water shortage at many places. There may be floods at some time and complete lack of rain for years at other places. देखिए, वाटर वैसे तो बहुत सारा है अर्थ में, लेकिन फिर भी वाटर की स्कैरसिटी होती है क्योंकि इसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या होता है कि कहीं पे तो आपकी फ्लड आती है, कहीं पे कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे मैं सुनने को बोलता है कि यहाँ पे वाटर की स्कैरसिटी है। Activity 14.1 to show the presence of impurities in the well water. Take about 10 ml of water in a porcelain dish. Eat it until the whole amount of water has evaporated. Cool the porcelain dish. We find that a solid residue is behind in the dish. This residue is formed by the substances which were earlier present in the well water in the form of dissolved impurities. This shows that well water contains some dissolved impurities. आपने एक porcelain dish में अपने 10 ml water लेना है, right? Well water लेना है, और इसको फिर आपने इसको हीट करना जब तक कि पूरा वाटर आपका इवेपोरेट नहीं हो जाएगा। फिर आप उसको डिश को ठंडा करेंगे तो आप देखेंगे कि सॉलिड रेजिड्यू बच जाएगा उस डिश में। तो ये रेजिड्यू एक्चुअल में क्या है, वो इम्प्योरिटीज़ हैं जो पानी के साथ डिजॉल्व होती हैं। About 97.4% of the total water on Earth is present in 5 oceans, with Pacific, Atlantic, Indian, Arctic and Antarctic. This water being salt is unfit for human consumption. A lot of fresh water is frozen in glaciers and in the polar ice caps. Thus, only 0.01% of the water on the earth is available to us for use. अच्छा देखिए, 97.4% जो है ये 5 ओशंस में पाया जाता है, राइट? बाकी आपका ग्लेशियर्स की फॉर्म, ग्लेशियर्स में है जो फ्रोजन फॉर्म में, पोलर आइस कैप में, यानी कि हमारे पास सिर्फ कितना वाटर बचता है, 0.01, जो कि अवेलेबल है फॉर कंजप्शन। इट इज दिस टाइनी फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वाटर दैट इज रिपीटेडली रिसाइकल्ड इन नेचर एंड यूज्ड बाय ह्यूमंस एंड other living beings. The industrial and technological revolutions have disturbed this natural resource and have played a major role in the pollution of water. Excessive use of chemicals such as fertilizers and pesticides in agriculture have also contributed to water pollution. Chemicals are sprayed on crop which subsequently run off into rivers, ponds and lakes, thereby polluting the water. Industrial wastes are also passed into water bodies. Most of the water being used by us for drinking purposes is contaminated. Men can survive without food for several weeks, but not without water. So we must conserve this life-giving liquid. We should use water judiciously without wasting even a single drop. अच्छा देखिए, अब इंडस्ट्रियल या टेक्नोलॉजिकल जो रेवोल्यूशन आए हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये जो हमारा नेचुरल रिसोर्स वाटर है वो डिस्टर्ब हुआ है, वो पोल्यूट हो चुका है। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का एक्सेसिव यूज़ हो रहा है। केमिकल जो क्रॉप्स में आपकी स्प्रे किए जाते हैं वो सब्सिक्वेंटली आपके रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स में आपके रन ऑफ हो जाते हैं, जिससे वाटर को पोल्यूट करते हैं, राइट? तो ज़्यादातर पानी जो है हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। अब देखिए, आप ये देखिए कि हम बिना खाने के तो काफ़ी टाइम तक रह सकते हैं, कुछ कई हफ्तों तक रह सकते हैं, लेकिन बिना वाटर के हम नहीं रह सकते। इसीलिए आपको वाटर को जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। Importance of water for sustaining life. Water is one of the most essential necessities of our daily life. All living things on earth depend upon water. Both plants and animals need water to perform various life processes to survive and grow. Water is also a habitat for a large number of aquatic plants and animals. Some important uses of water are listed below. For sustenance of life, all living organisms require large quantities of water to sustain life. Water helps in dissolving food materials in our body. Only that portion of food is useful for our body which is soluble in water. Water is a main constituent of blood. We lose about 3 kilograms of water per day in the form of urine and sweat. Therefore, we should drink sufficient water to make up this loss. देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हर किसी को वाटर की ज़रूरत होती है, वो भी लार्ज क्वांटिटी में। वाटर जो है हमारी फूड मटेरियल को डिसॉल्व करता है, और आपको पता है कि जो हमारा जो फूड है जो सॉल्युबल फॉर्म में है वही एब्जॉर्ब होता है। तो वाटर आपका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ब्लड का। हम लगभग एक दिन में 3 किलोग्राम जो वाटर है यूरिन एंड स्वेट की फॉर्म में से लूज करते हैं, इसीलिए हमें सफिशिएंट वाटर पीना चाहिए इस लॉस को पूरा करने की। अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बोट्स एंड
Ships sail on rivers and seas carrying passengers and materials from one place to another. For domestic use, we need a lot of water for bathing, washing and cooking food. Water used for drinking and cooking food should be free from harmful salts and bacteria. Water used for washing of clothes should be soft. अब देखिए बोट्स एंड शिप्स जो है आपकी रिवर्स एंड सीज में सेल करती हैं, यानी कि वाटर आपका मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी है. और डोमेस्टिक यूज़ के लिए जैसे कुकिंग, बेदिंग, ड्रिंकिंग, इन सब के लिए वाटर का यूज़ होता है. फॉर थेरापेटिक पर्पसेस, वाटर हैज़ medicinal value also in addition to its normal uses. An ice bag relieves us from headache. A cold water sponge is used to lower fever when applied on the forehead. तो water का medicinal value भी है. देखिए जैसे ice bag जो है उससे आप headache से आपको relief देते हैं, या cold water sponge है उससे आपका जो fever है वो lower हो जाता है. For generation of electricity, the potential energy of water stored in the big reservoirs by building dams in the rivers is used for generating electricity. Fast moving water from a height has a lot of energy. It is made to fall on a water wheel called a turbine. This in turn is used to run a generator to produce electricity. Electricity produced from the hydel power forms a prominent part of the energy resources. अच्छा, वाटर से देखिए इलेक्ट्रिसिटी आपकी बनती है, आपको पता है. डैम्स में जो आपका वाटर स्टोर होता है, देन उसके हेल्प से आपके टर्बाइन चलते हैं, देन इलेक्ट्रिसिटी आपकी जनरेट होती है. अ मीडियम फॉर aquatic animals and plants. Many animals like fish, frogs, crocodiles live underwater and take dissolved oxygen from water for breathing. Many plants also grow underwater and use dissolved carbon dioxide for photosynthesis. For agriculture, no plant can grow without water. We require large quantities of water to grow crops for our food. In fact, agricultural development of a country depends upon the available water resources. All big cities and civilization have developed on the river banks and sea shores. अब देखिए जितने भी aquatic animals या plants हैं, आपको पता है वो सारे वाटर में रहते हैं. वाटर की इनको रिक्वायरमेंट होती है. एग्रीकल्चर के लिए आपको पानी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कोई भी जो क्रॉप है विदाउट वाटर तो वो ग्रो नहीं करेगी. For propagation of plants, seeds of several plants are dispersed by flowing water of the rivers and streams. The seeds fall in water and are carried to far off places. इसके अलावा seed dispersal, water जो है seed dispersal में भी help करता है. Several varieties of plants have spread from one place to another in this manner. For sports and recreation, water also provides a medium for recreation and sports. People go to lakes and rivers for boating and swimming. For firefighting, fire is very important for us to cook our food, but it can cause loss of life and property if not handled properly. Firefighting units throw water over the burning object, cools the burning object and provides a cover of water vapor. This cuts off the supply of oxygen to the burning object and helps in putting out the fire. अच्छा देखिए, वाटर आपका एक मीडियम है रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट्स का. जैसे लोग लेक्स या रिवर्स पे जाते हैं बोटिंग या स्विमिंग के लिए, फायर कहीं पे लग जाती है, ब्रेकआउट हो जाता है, तो आग को बुझाया जाता है किसकी हेल्प से? वाटर की हेल्प से, क्योंकि ये क्या करता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देता है, राइट, एंड देन इट हेल्प्स इन पुटिंग आउट द फायर. डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर. वाटर एग्जिस्ट इन 3 physical states: solid, liquid and gas at different temperatures. Water exists in solid state as ice below 0 degrees Celsius. Water exists in liquid states between 0 degrees Celsius and 100 degrees Celsius. Water exists in gaseous or vapor state above 100 degrees Celsius as steam. The molecules of ice, water and steam are exactly the same. That is, they are all made up of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. The molecular formula of water is H2O. आपको पता है वाटर एक इकलौता सब्सटेंस है जो तीनों स्टेट्स में पाया जाता है. वाटर का फॉर्मूला आपका होता है H2O, यानी कि जो कि आपका बना हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से. 2 एटम्स इसमें आपके हाइड्रोजन के हैं एंड 1 एटम आपका है ऑक्सीजन. The 3 states of water are interchangeable by heating and cooling. Ice melts at 0 degrees Celsius to form water, but if water is cooled below 0 degrees Celsius, it again turns into ice. Thus, the process of converting liquid water to ice is called freezing, and the reverse is called melting. Both freezing and melting of ice takes place at the same temperature, that is 0 degrees Celsius. The constant temperature at which water changes from liquid state to solid state upon cooling is called freezing point. अच्छा, जो वाटर की तीनों स्टेट्स हैं ना, ये इंटरचेंजेबल है. जैसे कि आइस आपकी 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होकर वाटर बनती है, एंड वाटर को कूल किया जाएगा अगर 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो, तो अगेन ये आइस में आपकी टर्न हो जाती है, राइट. तो जो प्रोसेस है जिसमें आपका लिक्विड वाटर आइस में चेंज होता है, दैट इज फ्रीजिंग, एंड इसका जो रिवर्स है दैट इज मेल्ट. वाटर की जो 3 स्टेट्स हैं ये इंटरचेंजेबल हैं, यानी हीटिंग या कूलिंग से हम इसे इंटरचेंज कर सकते हैं. जैसे कि आइस आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है, वाटर बनता है. अगर वाटर को हम 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो आप उसको कूल करेंगे तो अगेन आइस में टर्न हो जाएगा. तो जो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड वाटर आपका आइस में कन्वर्ट होता है दैट इज फ्रीजिंग, एंड इसका रिवर्स है
मेल्टिंग। तो जो कांस्टेंट टेम्परेचर जिसमें वाटर जो है अपने लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है ऑन कूलिंग, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। The constant temperature at which water changes from solid state to liquid state upon heating is called its melting point. And जब water solid state से liquid state में आपका change हो जाता है on heating, that is melting point. Water changes to vapor at all temperature. This is known as evaporation. This is how our sweat dries up at room temperature and we are able to dry wet clothes even in the shade. The rate of evaporation increases when water is heated until it reaches a maximum at 100 degrees Celsius when it starts boiling. Any further heating won't raise the temperature further. The rate of evaporation will increase. The temperature remains constant once the water starts boiling. Similarly, on cooling, the steam starts changing to liquid water at 100 degrees Celsius. The temperature won't fall further as long as some steam is present. This is called condensation. देखिए वाटर आपका हर टेम्परेचर पे आपका इवेपोरेट होता है, राइट? तो इसे कहते हैं इवेपोरेशन। जैसे कि आपका रूम टेम्परेचर पे आपका स्वेट ड्राई अप हो जाता है, आप कपड़ों को शेड में भी सुखाएंगे तो भी वो ड्राई हो जाते हैं, राइट? तो जो रेट है इवेपोरेशन को इंक्रीज होता है जब वाटर को हीट किया जाता है, जब तक कि मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस पे ना पहुंचे जहाँ पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो फर्दर हीटिंग पे टेम्परेचर तो रेज नहीं होगा, बट जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली कूल होने पे जो स्टीम है वो स्टार्ट हो जाएगी आपकी लिक्विड वाटर पे चेंज होना एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर जो है वो और ज़्यादा आपका फॉल तो नहीं होगा। तो दिस इज कॉल्ड condensation. The constant temperature at which water changes from liquid state to gaseous state upon heating is called its boiling point. Thus, the change of state of water can be summarized as वो कांस्टेंट टेम्परेचर जिसमें वाटर जो है आपके लिक्विड स्टेट एक गैसियस स्टेट में आपका चेंज हो जाता है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। देखिए आपको यहाँ पे समराइज करके दिया गया है, आइस जो कि सॉलिड फॉर्म में हीट करेंगे वाटर बनेगा, राइट? वाटर का बॉयल करेंगे तो स्टीम बनेगा। ओके, स्टीम जो कि गैस है कंडेंस करेंगे तो लिक्विड बनेगा यानी वाटर, एंड इसको कूल करेंगे तो अगेन ये सॉलिड में आपका कन्वर्ट हो जाएगा यानी कि आइस। वाटर एग्जिस्ट इन all three states in nature. Arctic and Antarctic Ocean are full of ice and so are the tops of high mountains. Rivers and lakes have water in liquid form. Water in the vapor form is found in the atmosphere. Water absorbs energy when it changes from solid to liquid or from liquid to gas. For example, we feel cool when sweat evaporates from our body. On the other hand, energy is released when water changes from gas to liquid or from liquid to solid. For example, a burn sustained by exposure to steam is more severe than that from boiling water, as the steam gives out heat or releases energy when it condenses to water. Similarly, heat energy is also released when water changes to ice in the freezer of the refrigerator. अच्छा देखिए, वाटर जो है एनर्जी, वाटर एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को जब ये चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड में या फिर लिक्विड से गैस में। जैसे कि जब आपका स्वेट एवेपोरेट होता है आप कूल फील करते हैं, और एनर्जी आपकी रिलीज कब होती है? जब आपका वाटर चेंज होता है फ्रॉम गैस टू लिक्विड और फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। जैसे कि अगर स्टीम की वजह से आपको बर्न हो जाता है तो वो कुछ ज़्यादा सीवियर होता है देन बॉइलिंग वाटर, क्योंकि जो स्टीम है ना वो हीट को गिव आउट कर रही है, एनर्जी को रिलीज कर रही है, यानी कि जब वो कंडेंस होती है वाटर में। Water is called a universal solvent as it can dissolve almost everything. The solubility in water of most of substance increases with increase in temperature. The solubility of a solvent at a particular temperature is defined as the amount of solute that can be dissolved in 100 ml of water at that temperature. Water आपका एक universal solvent है जो maximum चीज़ों को अपने अंदर dissolve कर लेता है। Difference between evaporation and boiling. Evaporation. It occurs at all temperature. It takes place only at the surface of the liquid. When heat is supplied, the temperature increases. It is a slow and continuous process. Boiling. It occurs only at the boiling point. It takes place throughout the liquid. Temperature doesn't increase on supplying heat. It is a vigorous process. अच्छा देखिए, evaporation आपके हर temperature पे होता है, ओके, और ये लिक्विड के सरफेस पे होता है। जब हीट सप्लाई होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ये स्लो एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऑन द अदर हैंड बॉइलिंग आपके बॉइलिंग पॉइंट पे स्टार्ट होता है, ये थ्रू आउट द लिक्विड आपके होता है, और टेम्परेचर जो है आपका इंक्रीज नहीं होता ऑन सप्लाइंग हीट, और आपका एक रिगरस प्रोसेस है। कंपाउंड्स लाइक कॉमन सॉल्ट, शुगर, ग्लूकोज, अल्कोहल, मिल्क, fruit juices, acetic acid, etc. dissolve in water. Many gases like CO2 or carbon dioxide, oxygen, compounds like common salt, sugar, glucose, alcohol, milk, fruit juices, acetic acid, etc. dissolve in water. Many gases like carbon dioxide, oxygen and ammonia also dissolve in water. The solutions obtained by dissolving various substances in water are called aqueous solution. Solubility of gases in water plays a vital role in the life of
living beings. Aquatic plants and animals take their nutrition from the nutrients and oxygen dissolved in water. देखिए बहुत सारे कंपाउंड जो है आपके वाटर में डिजोल्व होते हैं, बहुत सारी गैसेज है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, अमोनिया, ये भी पानी में डिजोल्व होती हैं. तो जो सोल्यूशन आपका बनता है जब हम डिजोल्व करते हैं वेरियस सब्सटेंसेस को वाटर में, तो उसे कहते हैं एक्वस सोल्यूशन. सॉल्युबिलिटी जो, अच्छा देखिए गैसेस आपके वाटर में सॉल्युबल होती हैं, इसकी वजह से जो एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं. द solubility of oxygen in water decreases with the rise in temperature. अब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ऑक्सीजन की solubility डिक्रीज हो जाएगी. This kills a lot of aquatic animals because of reduced oxygen or oxygen starvation. और इसकी वजह से बहुत सारे जो aquatic animals हैं वो मर जाते हैं. Green aquatic plants utilize the carbon dioxide dissolved in water for photosynthesis, while bacteria act upon the nitrogen dissolved in water and convert it into nitrogenous compounds. These compounds provide nourishment to water plants. Water pollution. We use water for many purposes. After use in homes, agriculture, industry, water gets polluted. Contaminated and polluted water is neither good for the animals nor for the plants. It causes many serious diseases like typhoid, diarrhea, and jaundice, which claim many lives every year. There's a contamination of water with undissolved solid particles, dissolved salts, sewage, industrial waste, algae, and bacteria is called water pollution. With increase in population and industrial activity, the amount of waste dumped into rivers has become very high. Thus, our sources of water are getting more and more polluted. There is an urgent need to understand the causes of water pollution and adopt appropriate measures to prevent it. अच्छा देखिए, वाटर हम बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, उसके बाद यूज़ करने के बाद जैसे कि होम्स में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में वो पोल्यूट हो जाता है. तो ये जो पोल्यूटेड या कंटामिनेटेड वाटर होता है ये तो एनिमल्स और प्लांट्स के लिए यूज़ नहीं होता. इनकी वजह से बहुत सारी डिसीज़ हो जाती है लाइक दिस डिसीज़, टाइफॉइड, डायरिया एंड जॉन्डिस, है ना. तो जो कंटामिनेशन है वाटर का, जिसमें आपके अनडिसॉल्व्ड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं या डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं, इसकी वजह इससे कहा जाता है वाटर पोल्यूशन. तो अब क्योंकि पॉपुलेशन आपका बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी आपकी बढ़ रही है, तो जो वेस्ट डंप हो रहा है रिवर्स में वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है. तो इसकी वजह से आपका वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो. तो ये टाइम है कि हम कुछ अप्रोप्रिएट मेजर्स लें इसको प्रिवेंट करने के लिए. तो वेरियस कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन आर डोमेस्टिक वेस्ट. द वेस्ट वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम आवर होम्स कंटेन्स डर्ट फ्रॉम वॉशिंग आवर क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स, डिटर्जेंट्स, एक्सक्रीटा फ्लश्ड डाउन द टॉयलेट एंड फूड वेस्टेज वॉश डाउन द ड्रेन. तो देखिए वाटर पोल्यूशन का एक मेन कॉज है डोमेस्टिक वेस्ट, यानी कि जो हमारे घरों से पानी डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, वो आपका कंटैमिनेटेड होता है, राइट. नंबर 2 इज sewage. The sewage that is disposed of in water bodies like lakes, rivers, or the sea via drains is a major source of water pollution in the big cities. The soaps and detergents in domestic sewage are non-biodegradable. Excreta and cattle dung also contain several harmful microbes that can cause diseases like jaundice, cholera, typhoid, and tuberculosis. Other aerobic microorganisms cause decay of organic impurities present in the wastewater, thus consuming the dissolved oxygen in water. This oxygen deficient water becomes unsuitable for survival of aquatic flora and fauna. अब आपका जो sewage आपका डिस्पोज होता है आपकी रिवर्स में या सी में ड्रेन्स के थ्रू, ये मेजर कॉज है वाटर पोल्यूशन का. आपके सोप एंड डिटर्जेंट जो है आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल है, कैटल डंक है, एक्सक्रीटा है, इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाती है अगर ऐसे पानी को कंज्यूम कर लिया जाए तो. Petroleum and petrochemical products. The spilling of crude petroleum oil into the sea is causing danger to the survival of various living beings. The crude oil forms a layer of oil on the water surface called an oil slick. The oil slick does not allow atmospheric oxygen to dissolve in sea water, creating oxygen deficiency. It is very harmful for aquatic plants and animals. जैसे कई बार क्रूड ऑयल जो है आपका पेट्रोलियम वो स्पिल हो जाता है सी में, राइट. अब क्योंकि ये ऑयल है तो वाटर के ऊपर एक लेयर बना लेता है. लेयर बनाएगा तो इससे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी और एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स को बहुत ज़्यादा हार्म ये पहुंचाएंगे. एग्रीकल्चरल वेस्टेज, fertilizers, insecticides, pesticides and weedicides are extensively used in present day agriculture practices to meet the demands of the growing population. अच्छा देखिए आप एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चरल लैंड में आपके फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स ये सारे बहुत ही ज़्यादा यूज़ हुए जा रहे हैं. हाउएवर दीज केमिकल्स आर poisonous in nature and contain many harmful substances. तो ये सारी chemicals poisonous होते हैं, उनमें कुछ harmful substances होते हैं.
They are sprayed on crops and subsequently get washed off by rain and also seep into the ground. The rainwater finally runs off into ponds, lakes, and rivers nearby, polluting the water. This leads to an increased concentration of nitrates and phosphates in water, encouraging aquatic plants like algae to grow faster. Growing algae consume the dissolved oxygen in water, thus making it difficult for water animals to survive. अब इनको क्रॉप्स में स्प्रे किया जाता है, फिर ये आपके वॉश ऑफ हो जाते हैं रेन से एंड कुछ आपके ग्राउंड में सीप हो जाते हैं. तो रेन वाटर फाइनली आपका कहाँ जाता है? पॉन्ड्स में, रिवर्स में, और इस तरह से वाटर को पोल्यूट करता है. इसकी वजह से नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वाटर में बढ़ जाता है, जिससे कि कुछ एक्वेटिक प्लांट्स हैं जैसे कि एल्गी, ये आपका बहुत जल्दी से ग्रो करती है. और क्या करती है? ग्रोइंग एल्गी क्या करती है? जो ऑक्सीजन है ना, जितना उसको डिजोल्व करती है, और इससे फिर क्या होता है कि वाटर एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है. पेस्टिसाइड्स washed into water bodies contaminate the water and poison fishes as well as animals including humans that eat them. Industrial waste. The water discharged by the industries into drains and rivers cause water pollution. It is called industrial effluent. It contains many harmful and poisonous chemical compounds and ions of metals like lead, mercury, cadmium, arsenic, etc., which make the water unfit for human consumption as well as for the survival of aquatic plants and animals. Industrial wastes also contain toxic vapors, gases, waste from leather, textile, paint, dyes and drug industries. अब देखिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है सारा का सारा आपका डिस्पोज हो जाता है रिवर्स में, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है. इनमें बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए. इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उनमें बहुत सारे टॉक्सिक वेपर्स होते हैं, गैसेस होते हैं, और आपके जैसे कि आपका जो वेस्ट आपका लेदर, टेक्सटाइल, पेंट या डाइज या ड्रग इंडस्ट्रीज का होता है. Even hospitals are known to throw their wastes containing disease-causing germs and laboratory chemicals, including some very dangerous radioactive chemicals, into rivers and streams. Now you can well imagine how toxic water can get. यहाँ तक कि जो आपका हॉस्पिटल होता है या आपकी जो लेबोरेटरी होती है जिनमें कुछ केमिकल्स आपके होते हैं, ये इनमें बहुत ही ज़्यादा आपके डेंजरस रेडियो एक्टिव केमिकल्स होते हैं, ये भी डिस्चार्ज किए जाते हैं आपके रिवर्स या स्ट्रीम में. Water pollution is harmful. It must be controlled and prevented. People working at home and industries must be educated to use devices for prevention of water pollution. Several environment protection laws have been enacted in our country which are applicable on all commercial units. These include industries, hotels, municipal corporations and other civic bodies which discharge wastewater. Although water pollution cannot be totally prevented, it can be minimized by adopting certain methods as discussed below. Avoid direct disposal of toxic industrial waste and other wastes into water sources like rivers and lakes. Every industry must install an effluent treatment plant, ATP, and industrial waste should be chemically treated to neutralize the harmful substances present in them, thus making it harmless. देखिए, जो डायरेक्ट डिस्पोजल है टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट का या दूसरे वेस्टेज का, उनका डायरेक्ट जो डिस्पोजल हो रहा है उसको अवॉइड करना चाहिए, और हर इंडस्ट्री को एक एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल करना चाहिए जिसमें उनमें से जितने भी जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो आपके निकल सकें और फिर ये हार्मलेस बने. Avoiding direct disposal of sewage into the rivers. Sewage should first be treated at the sewage treatment plant to remove the organic matter from it. Manure can be made from it. Sewage का डायरेक्ट डिस्पोजल नहीं होना चाहिए, सबसे पहले उसको ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट करना चाहिए. Excessive use of fertilizers and pesticides and weedicides etc. should be discouraged. The sludge produced in the sewage treatment plant should be used to generate biogas and the residue can be used as organic matter. Fertilizers and pesticides का जो excessive use हो रहा है उसको minimize करना चाहिए. Tree plantation programs along the river banks or on barren lands should be encouraged. ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम है जो आपके रिवर बैंक्स पे या किसी भी बैरन लैंड्स पे आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए. ऊपर कर दो. The use of synthetic and non-biodegradable detergent should be discouraged. Instead, biodegradable detergent should be washed. Washing our clothes and utensils near sources of water like ponds and lakes should be avoided. Biodegradable detergents का use करना चाहिए instead of non-biodegradable detergent. Clothings को वॉश नहीं करना चाहिए, यूटेंसिल्स को नहीं धोना चाहिए किसी भी वाटर सोर्स के पास. Dead bodies of human beings and carcasses of dead animals etc. should not be thrown into rivers, ponds, lakes etc. The excreta and garbage should not be discharged into rivers. These should be used for the production of biogas.
Industries should also try to minimize water consumption. This will automatically result in less water being polluted. General awareness should be spread among the masses regarding the harmful effects of water pollution. Prevention is always better than cure. ह्यूमन बींग्स की डेड बॉडी या एनिमल्स की डेड बॉडीज़ इनको वाटर सोर्स में नहीं डिस्पोज करना चाहिए, थ्रो करना चाहिए. आपका जो एक्सक्रीटा या गार्बेज है उसको रिवर्स में डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए. इंस्टेड इसको यूज़ किया जा सकता है इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. इंडस्ट्रीज़ को वाटर कंजप्शन को मिनिमाइज करना चाहिए और एक जनरल अवेयरनेस जो है वो लोगों के बीच में स्प्रेड करनी चाहिए. The government and industry should join hands and launch plants for the purification of water in rivers, lakes, ponds, etc. Regular cleaning of rivers should be undertaken. Ganga Action Plan is an example of one such plan launched by the Government of India. गवर्नमेंट और जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको साथ में मिलकर काम करना चाहिए, प्लान्स लॉन्च करने चाहिए वाटर की प्योरिफिकेशन के लिए. Scarcity of water. In cities or villages that are not situated near any river or lake, the main source of water is groundwater. It is a renewable resource as it gets replenished by rainwater that seeps through the soil. This level of groundwater is called the water table. Water shortage is said to have occurred if level of availability of water does not meet certain defined minimum requirements. The actual quantity that determines the minimum per capita requirement may differ from place to place. अच्छा, सिटीज़ एंड विलेजेस जो कि किसी रिवर या लेक के पास नहीं, उनका मेन सोर्स ऑफ वाटर था ग्राउंड वाटर. आपका रीन्यूएबल रिसोर्स है. तो ये जो लेवल है ग्राउंड वाटर का, इसको कहते हैं हम वाटर टेबल. वाटर शॉर्टेज का मतलब क्या होता है कि जो आपका पानी किसी पर पर्सन के लिए अवेलेबल है, आपका वो सर्टेन डिफाइंड, आपकी जो सर्टेन लिमिट है उससे कम आपको मिल रहा है. इसका मतलब वाटर की स्कैरसिटी है. अब ये जो पर कैपिटा रिक्वायरमेंट होती है वाटर की, ये डिपेंड करता है, ये डिफर करता है प्लेस टू प्लेस. Wells have to be dug deeper to reach the water table to get water. This has resulted in water scarcity as the rate of water consumption or demand of water is much more than the supply. That is, the rate at which it is being replenished by rain. The demand for water may also vary considerably between different regions of a country and also among usages of water. अच्छा, अब देखिए क्या है कि जो वेल्स हैं उनको और ज़्यादा गहरा डीप किया जा रहा है, ठीक है, पानी निकालने के लिए. इसकी वजह से वाटर स्कैरसिटी होगी, क्योंकि जो रेट ऑफ वाटर कंजप्शन है या जो डिमांड है वाटर की वो सप्लाई से ज़्यादा है. सम ऑफ द मेजर रीजंस फॉर द स्कैरसिटी ऑफ वाटर आर ओवर पॉपुलेशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, वाटर पोल्यूशन, राइट, over irrigation, increased demand, climatic variations, poor water resource management, misuse and wastage, disputes between states regarding water sharing, excessive urbanization and industrialization. तो देखिए कुछ बहुत सारी ओबियस रीजंस हैं जो आपको बताएंगे इनकी वजह से वाटर की स्कैरसिटी होती है. कई बार क्या होता है कि दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स हो जाता है वाटर शेयरिंग को लेके, कई बार, और एक्सेसिव अर्बनाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या है कि आपकी वाटर की स्कैरसिटी हो. सो ऑल दीज आर द रीजंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर स्कैरसिटी. Water scarcity can be prevented to an extent by adopting some of the methods discussed below. Prevent misuse and wastage of water, prevent water pollution, recycle water for reuse, adopt rainwater harvesting techniques, efficient use of water in agriculture industry, adopt drip irrigation techniques to prevent water wastage, recharge and replenish groundwater, build dams and tanks to store rainwater, replace large flush tanks with the smaller ones. The most important factor is control population and adopt small family norms. तो देखिए वाटर स्कैरसिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं कुछ हद तक. सबसे पहले तो इसका जो मिसयूज़ है इसको प्रिवेंट करें, वेस्टेज ना करें, वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करें, रिसाइकिल करें वाटर को फॉर रीयूज़, राइट, और एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर आपका यूज़ हो. एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में ड्रिप इरिगेशन मेथड को अडॉप्ट किया जाए, रिप्लेनिश एंड रिचार्ज हो ग्राउंड वाटर, डैम्स बनाए जाएँ, टैंक्स बनाए जाएँ रेन वाटर को स्टोर करने के लिए, लार्ज फ्लश टैंक को स्मॉलर के साथ रिप्लेस करना चाहिए. Effects of water scarcity on people's life. Increased incidence of waterborne disease due to poor sanitation facilities. Have to pay high price for buying water. Uncertainty of availability of water for agriculture. Such an area will remain backward and underdeveloped, thus lowering the scope for employment generation. अब वाटर स्कैरसिटी के क्या इफेक्ट हैं? सबसे पहले तो वाटर बोर्न डिसीज़ हो जाएंगी पुअर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ की वजह से. ओके, हाई प्राइस पे करना पड़ेगा वाटर के लिए, और आपका जैसे जो एरिया है वो आपका बैकवर्ड रह जाएगा, अंडर डेवलप्ड रह जाएगा, और वहाँ पे फिर एम्प्लॉयमेंट के लोअर स्कोप्स होंगे. People will have to travel to long distances or use long pipes to transport water. Life will be full of hardship and misery, lowered productivity of plants and animals.
Industrial processes that involve extensive usage of water will be reduced. अब लोगों को पानी नहीं होगा तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, या लंबे लंबे पाइप्स यूज़ करने पड़ेंगे पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए. लाइफ जो होगी कठिनाइयों से भरी होगी, प्रोडक्टिविटी जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स की कम हो जाएगी, और जो आपके इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे. दिस वाटर स्कैर्सिटी विल लीड टू एन ओवरऑल डिक्लाइनिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स, मेकिंग लाइफ इवन टफर. तो वाटर स्कैर्सिटी से जो ओवरऑल डिक्लाइन होगा लिविंग स्टैंडर्ड में, जिससे कि लाइफ और ज़्यादा टफ हो जाएगी. Activity 14.2. Visit any village near your locality, see the conditions of water supply there. Note if there is sufficient supply of water or scarcity of water. If there is scarcity of water, try to find out the conditions and reasons for it. Observe the lifestyle of people in the village. How has water scarcity affected the agriculture and livestock in the village? How do people fulfill their waste requirements? Record your observations and make a list of activities that can help in solving the water scarcity problem in that village. Also try to spread awareness among villagers regarding water pollution, waterborne diseases and water conservation. आप किसी नियर विलेज में जाएं, आपकी लोकेलिटी के पास, वहाँ की कंडीशन देखिए, वहाँ पे सफिशिएंट सप्लाई है वाटर का या नहीं है, और अगर स्कैर्सिटी है तो कंडीशंस, रीजंस फाइंड करें कि क्यों ऐसा है. ऑब्जर्व करें लोगों का लाइफस्टाइल क्या है, किस तरह से वाटर स्कैर्सिटी ने लोगों को अफेक्ट किया है. लोगों को के बीच में एक आप जो है अवेयरनेस स्प्रेड करें रिगार्डिंग वाटर पोल्यूशन या वाटर बोर्न डिसीज या फिर वाटर कंजर्वेशन के लिए. एक्टिविटी 14.3. On the basis of your observations and activity 14.2, tabulate the following information about the village to study the variation and availability of water in that region. Name of village, major sources of water, rainfall pattern, nature of soil, crops grown, number of livestock, number of people, profession or livelihood of people, living standard of the villagers, water availability, water wastage or misuse, water conservation techniques adopted. So आपकी ये जो एक्टिविटी है 14.2 के बेसिस पे आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स करने. Points to remember. Our bodies have 70% water and help in essential metabolic functions performed by the body. Oceans, seas, rivers, lakes, groundwater and frozen water are the major reservoirs of water. All these are replenished by rainwater. Water exists in 3 states: solid, ice, liquid water and gas steam at different temperatures. Gases like oxygen and nitrogen are slightly soluble in water, whereas carbon dioxide has fairly good solubility. This property of water is very useful for aquatic plants and animals. Rainwater and deep groundwater is usually fit for drinking, but river water contains many suspended impurities and pollutants. Seawater is saline and hence unfit for drinking. Water is renewed continuously in nature through the water cycle. Water is polluted by discharging domestic sewage, agricultural and industrial wastage directly into water bodies without treating it. Water can be conserved by avoiding wastage, using better irrigation methods and recycling industrial water. Rainwater harvesting is a very successful method of groundwater conservation. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, and इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.